and again, people on Twitter, they make fun of my religion, my religious books, my prophet, and they do it with impunity. I mean, there are times when I feel like writing on social media that, guys, you know what? I am a Muslim. Deal with it. Social media. When people start abusing each other under the garb of freedom of speech and expression, they must realize that what they are doing is attacking the freedom of speech and expression of another person. And that's not allowed. That's a crime. Whatever we believed in, all the principles of humanity that we maybe crammed in our childhood and somewhere felt it and then made a part of our conscience, I think अब वो वक्त है जब ज़मीर को गवाही देनी है. In the majoritarian narrative, pop culture is the latest playground. It is easier than physical lynching, and it's now permeated across our films. Well, the beginning was through Kashmir Files. The latest has been the Kerala story. The villain, it seems to be from just one community, whether it is biryani or a cricketer. But really, what does it take to be on the other side? On this episode of Table Talk, Sayema, well-known RJ and artist, joins me. Before we move ahead, a quick reminder also to like, share and subscribe to my YouTube channel, Jyotsna. मैंने सोचा था कि अगली दफा बात करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, कुछ माहौल अच्छा होगा. We will talk of good and pleasant things, but it seems that, the challenges only increase. माहौल अच्छा होगा ज्योत्सना, माहौल जरूर अच्छा होगा. उसी की कोशिश है और उसको अच्छा होना ही है. वक्त की अच्छी बात है कि गुजर जाता है, बदल जाता है, एक जैसा नहीं रहता. तो मुझे लगता है ये वक्त है when it is the time when we actually learned that saying, right? When the going gets tough, the tough get going. So I guess this is that time when whatever we believed in, all the principles of humanity that we maybe crammed in our childhood and somewhere felt it and then made a part of our conscience, I think अब वो वक्त है जब ज़मीर को गवाही देनी है और उस ज़मीर के सामने बहुत मजबूती से खड़े होने का वक्त है. So yeah. ये मजबूती से खड़े रहने के लिए साइमा, what does it take? एक सच्चा दिल और एक अच्छी नीयत, बस और कुछ नहीं. Quite simple, isn't it? And yet so many people have faltered along the way. Because Jyotsna, this is exactly where जिसको बोलते हैं कि इंसान का इम्तिहान ही यही होता है. Just think of those situations जब हम जिंदगी में तय करते हैं कि अब ये काम मुझे करना है. It never becomes easy. We have so many hurdles on the way that sometimes we feel, what is it? I mean, today, let's say today if I decide कि मैं अब सिर्फ सच बोलूंगी, from the next minute I will have situations and challenges and मुसीबत and situations जहाँ पे मुझे झूठ बोलने की temptation होगी. वो कुछ नहीं है. They're all my examinations, because if I deserve to reach my goal, then I better be prepared for it. So I think these are the unit tests, and ultimately if we clear them all, we'll pass the final exam with flying colors. सिर्फ दो पिलर्स को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखना है, अच्छी नीयत और अच्छा दिल. And I think we'll be able to reach our destination. And if I might add here, I'd like to add this, that जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी आवाज उठाए सच्चाई के लिए या अच्छाई के लिए. कम से कम अपना दिल साफ कर ले. कम से कम जब खुद से बात करे तो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे. उतना ही काफी. Yeah, I think where we falter is when we start becoming as discriminatory, when we start supporting injustice, when we start stereotyping people, when we start thinking that we are superior from another person, when we start believing in inequality, is when we fail as human beings. Otherwise, we're just absolutely fantastic people. That is what progress and growth is all about. It's nothing but actually bettering ourselves. मैं आज कल से बेहतर मुझे होना है.
जो मेरा गुजरा हुआ कल है उससे मेरा आने वाला कल बेहतर होना चाहिए. बस वही ग्रोथ है, वही डेवलपमेंट है, वही प्रोग्रेस है, वही प्रोस्पेरिटी है, आई गेस. You know, you are part of the creative media. We are all part of the creative media. You know, we take that very seriously. Our creativity, our imagination, our boundaries. मगर आजकल जिस प्रकार की movies release हो रही हैं, उनमें से कई ऐसी हैं that are, you know, targeting specifically one community, the Muslim community. इसके तहत, you know, freedom of expression, where does it stand? Jyotsna, freedom of speech and expression को हमें बार बार पढ़ना होगा. And I wish to like read it out from the Constitution of India. Okay, so there's a text. When we read the article, there is Article 19(1). Okay, and I'm quoting. This provision provides that the freedom of speech and expression is protected, while also recognizing the need for certain reasonable restrictions to maintain social order and harmony. Freedom of speech and expression या भी किसी भी तरह का freedom responsibilities के साथ आता है. Freedom of speech वहाँ पे खत्म हो जाती है जब मैं किसी दूसरे की respect, दूसरे की dignity, social harmony इनको disturb करने लगती हूँ तो मेरी freedom of speech and expression वहीं रुक जाती है. Freedom of speech and expression, it comes with a lot of responsibility. I was reading this somewhere and I really want to, you know, read it out. Freedom of speech or freedom of expression applies to all kinds, including those that may be deeply offensive. While national and international law protect free speech, there are instances where speech can legitimately be restricted under the same law, such as when it violates the rights of others or advocates hatred and incites discrimination or violence. On Twitter, on social media, when people start abusing each other under the garb of freedom of speech and expression, they must realize that what they are doing is attacking the freedom of speech and expression of another person. And that's not allowed. That's a crime. There are no dearth of movies which have been made on true instances, extremely violent personal stories, extremely heart-wrenching, you know, injustices which have happened. But after watching that movie, the feeling that I'm left with is a very positive feeling. Talk about Schindler's List. Talk about Khuda Ke Liye. Talk about even Omerta. They're all movies based on true stories. But on filmों के dish call I'm getting. So उन फिल्मों को देखने के बाद मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होती. उन फिल्मों को देखने के बाद मेरा दिल मुझसे कहता है कि मुझे कभी किसी से ऐसी नफरत नहीं करनी. आतंकवाद अपने आप में एक आइडियोलॉजी है जो कोई फॉलो कर रहा है. वो आइडियोलॉजी गलत है और वो किसी भी मजहब के साथ जोड़ी जा सकती है. किसी भी मजहब के नाम पे कोई भी terrorist activity हो सकती है. We have more instances where we have seen people of the same religion doing a lot of good. Many more instances. And we have a select few where people have linked their wrongdoings to a certain religion or community or caste. And there we completely, very comfortably overlook that there are certain minds behind it. Not an entire religion or community. Because had that been true, then everybody who follows that religion would have been doing the same thing, right? जब आप कोई फिल्म, कोई किताब, कोई खबर उस नियत से बनाते हैं कि इस नफरत को फैलाकर आपको कोई फायदा होगा, तो आपकी नियत खराब है. ये जो फिल्में कई बनती हैं because you know the investment is less, you know there's not much investment in the film. दूसरे actors are also unknown, मगर वो ideology के base पे चलती हैं and then they become such big hits that they, you know, there are other people who are looking कि ये आसान तरीका है profit बनाने का. Absolutely. और हर चीज जितनी भी चीजें sensational होती हैं वो बिकती हैं.
ये हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बुरी कमेंट्री है that we are forever looking for news or looking for discussions which are very sensational in nature. So that is what is being provided to us. But we know in this atmosphere, it is so easy to succeed by trampling over the rights and dignity and respect of one community. Just look at the sequence of events. फिल्म के पहले उसके बारे में जो बातें होती हैं, it's got nothing to do with the art of filmmaking. Let's talk about the Kerala story. It's based on lies. I mean, the producers and the directors have confessed in the apex court that the number was not 32,000. It's just 3. It's just 3. And in those 3, there are 2 Christians and 1 Hindu. To say that this is based on the life of 3 women and such unfortunate, turn of events happened in their life. Why were they compelled to lie? The only thing that people spoke about was 32,000 girls. The figure itself is not right. But the damage is done, isn't it? In the sense. Absolutely. So that's why I'm saying the intention is so wrong. The intention is to, create animosity and hatred and divisiveness among people. How do these people even face themselves? How can I live by ruining another life? And there are so many lives at stake, right? They have used half of freedom of speech and expression and trampled over the freedom of, the right to respect, dignity, social harmony, everything. That they've trampled over all these provisions for some very personal gains. And the stereotyping in the sense is that the new villain in the movies is now the Muslim guy. Unfortunate, but it seems to be the norm these days. Where does it leave the young child in the community? I mean, we've seen instances जहाँ पे college में एक Muslim लड़के को बोला गया था, the teacher gave the boy a flack, and there have been instances they've been asked to leave, the hijab ban in Bangalore. It's for you, me to understand at a different age, it's a completely different ball game for when people are younger, children are younger, and they are watching, they are listening. I think most of us, and I'm talking about Muslims, we have undergone instances where we've been singled out as Muslims in a classroom, or we've been stereotyped in a way and asked very uncomfortable questions, and basically मकसद ये था कि आपको बदनाम किया जाए क्योंकि आप एक खास मजहब के हैं. ये हम सब के साथ हुआ है. कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो अगर किसी एक मुस्लिम का मजाक उड़ाएंगे या उसके साथ स्लरिंग करेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी. हम द केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं. उन 3 औरतों के साथ जो हुआ कभी किसी के साथ ना हो यार. लेकिन क्या हमारी कंट्री में कम इंस्टेंसेस है आज के दौर में मजहब के नाम पे और धर्म के नाम पे लिंचिंग्स होती हैं? क्या उस पे मूवी बन सकती है? अगर कोई इस चीज को डिनाई करता है कि एक खास कम्युनिटी को सिंगल आउट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको उन चीजों की सजा मिलती है जो जुर्म उन्होंने किए भी नहीं, सर उठा के जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये एक डिनाइल है. एज अ कंट्री हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम उन धब्बों को इरेज कर सकें, लेकिन हम नए धब्बे लगा रहे हैं अब. These are traumatic instances when a person of a certain identity has to hide his or her identity. Time and again, people on Twitter, they make fun of my religion, my religious books, my prophet, my attire, my food, everything. And they do it with impunity. Where do they get this so-called freedom from? Because if
if law machinery would have been doing its own work, then it's all out there in front of the system, right? I mean, there are times when I feel like writing on social media that, guys, you know what? I am a Muslim. Deal with it. What is it? वो मेरा जाती मामला है. It's my, you know, it's extremely personal. Who gave you the right to, you know, kind of come and ask me and make me accountable and answerable about my faith? But they do it with impunity. And the same cannot be done with them. It should not happen. It should not happen with anyone. Sayema, is Mohan made to be, a Muslim woman? The battlefields जो सब बदल गए हैं, like you said, you know, पहले lynching थी, now the battlefield is so the creative world, you know, films, pop culture. Twitter हमेशा से battleground रहा है. What does it take? What is it like on a daily basis? It's a struggle inside, and it is based on a very, very strong conviction. मेरा ईमान बहुत मजबूत है. मैं जानती हूँ कि हर रात की सुबह होती है. मैं जानती हूँ कि एक नया दिन आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता. मैं जानती हूँ कि वक्त बदलेगा. मैं ये भी जानती हूँ कि सच की जीत होगी. मैं ये भी जानती हूँ कि बेगुनाह जो हैं वो एक दिन उनके साथ इंसाफ होगा. सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता. और मैं ये भी जानती हूँ कि हर दिल में कभी ना कभी मोहब्बत जीतेगी. नफरत कुछ दिन की मेहमान होती है, बहुत सारा नुकसान कर देती है, मगर जीत हमेशा मोहब्बत की होती है. हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे अगर हमने नफरत को जिताया. जो मैं कहती हूँ कि नफरत कार्बन डाइऑक्साइड है, मोहब्बत ऑक्सीजन है. कब तक दूर रहेंगे हम? And I'm extremely optimistic. I'm like, you know, I think shamelessly optimistic about things. And it requires a lot of self-discipline. Because जो पहली फीलिंग एक इंसान के अंदर आती है वो ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपके अंदर एक बदले की भावना जागती है. और वो जो बदले की भावना है वो हर इंसान का अपनी फाइट है. What we have to understand, believe in and practice is one simple thing जो हमने बचपन में सीखा था. जो चीज हमें बुरी लगती है वो दूसरे को भी बुरी लगती है. तो जो हमारे साथ हुआ और हमें बुरा लगा, एग्जैक्टली वही हमें किसी और के साथ नहीं करना ताकि उसको बुरा ना लगे. एंड बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर, ज्योत्सना, I think it is my responsibility to raise my voice for the oppressed, to tell that one person who's humiliated today that you're not alone. I'm standing by your side. To speak each time there is a need for support, hope, to create that world where all of us should be able to breathe, live our dreams. We've got to be progressive. They've turned, you know, such a beautiful word, liberal, into a gali on Twitter. Can you believe it? I mean, you know, मुझे कभी-कभी हंसी आती है. एक इंसान जो लिबरल है, जो अपने जहन में आजाद ख्याल है, जो इस चीज में बिलीव करता है कि एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे हर इंसान को उसके मुताबिक उसको जैसे जीना है, उस जीने की आजादी होनी चाहिए, ख्वाब देखने की आजादी होनी चाहिए, कि मैं जज ना करूं, कोई मेरे जैसा नहीं है तो भी वो अच्छा है. ये है लिबरल सोच कि अमीरों और गरीबों में इतना फर्क ना हो. कि ये गाली कब से बन गई भाई? The Constitution of India is a highly progressive and liberal book. That's the pride of our country. Since when has it become bad? So yeah, it is difficult. It's challenging. Sometimes it's tiring. Sometimes it's extremely scary. That's what Iman is all about. That's what belief and conviction is all about. वो इंसान जो पूरी जिंदगी चुप रहा, जिस दिन वो जुल्म उसके घर पहुंच जाता है, वो आग उसके दरवाजे को पकड़ लेती है, तो वो भी बोलता है ना. मगर उस दिन वो उन चेहरों को तकता है जो एक दिन वो खुद था. वो लोग
जो आज चुप है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि the very first instance of injustice, and when it happens in front of your eyes, speak up, say that it's wrong. You have no idea what it will do to others. WhatsApp forwards चल रहे हैं, एक hateful message है, forward हो रहा है, forward. एक इंसान अगर decide करता है मैं forward नहीं करूंगा, he is breaking that queue of hatred and is the savior of so many. There are so many जिनको जो WhatsApp forward आते हैं, they will not believe कि वो fake है या misinformation है. You know, they are going to जो आ रहा है वो उनको blindly follow भी कर रहे हैं. So I mean, it's not about breaking the chain for some. It's like हाँ ये सही है. So that's exactly what I'm saying, Jyotsna. That ये जिसका भी design है to create hatred, उन्होंने बहुत study की है कि एक इंसान की फितरत क्या होती है. That I will not check the source. I won't. I'll just believe. And just imagine, हम वो लोग हैं, अगर हमें आके कोई इंसान अपनी कोई बात बताए, हम बिलीव नहीं करेंगे, हम शक करेंगे, हम पता करेंगे, हम तहकीकात करेंगे. एक ऐसी नफरत भरी खबर है जिसकी तहकीकात नहीं करेंगे, हम उस पे यकीन कर लेंगे. और ये हम पे कॉमेंट, अगर कोई इतना नफरत भरा कोई भी ऐसा कंटेंट है या पीस है जहां पे मेरे दिल में एक दूसरे इंसान से नफरत पैदा हो रही है, एक दूसरी कम्युनिटी से नफरत पैदा हो रही है, तो मेरे लिए वेकअप कॉल होना चाहिए कि ऐसा क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ूं. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सब एक जैसे हैं? कहीं ना कहीं मैं खुद को सुपीरियर महसूस करना चाहती हूँ. एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. अच्छा इंसान बनने में बड़ी मेहनत लगती है, but the only thing worth doing is actually this. Start becoming a better human being. You know, you speak about the conviction. For you, you're a public figure and your conviction, but behind every woman, every public figure, there's also a family. And you know, it's in these times, you know, where women speak up, it's a very tense family. Is that something that happens आपके घर में भी? वही सवाल मुझे लगता है जो कि हर उस इंसान से पूछे जाते हैं जो आज इनजस्टिसेस के खिलाफ आवाज उठा रहा है. क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे लिखने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? कुछ बदल गया, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा. तो बहुत वक्त तक मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब है. मेरे बोलने से कम से कम मैं तो नहीं बदलूंगी, कम से कम मैं खुद से तो कह रही हूं कि ये गलत है. बूंद बूंद से सागर बनता है ना. हर इंसान को कोशिश करनी होगी. जब इतना बड़ा पेड़ गिरता है, एक इंसान उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर 20 लोग जुड़ जाएंगे तो हम बच जाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं हिम्मत करके बोलती हूँ तो 20 और लोगों में हिम्मत आती है. और बस इतनी ये छोटी छोटी कोशिशें हैं जो कि करते रहना है. आप किसी दिल का उम्मीद बन जाए, आपके लफ्ज किसी के लिए मरहम का काम करें. जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर उसको पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इंसान मिलता है जो कहता है मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, उसके लिए उतना ही काफी होता है. हमें वो एक इंसान बनना है. मैं अभी हाल में एक एल्डरली जेंटलमैन से मिली जो कि मुझे फॉलो करते हैं. तो वो उन्होंने मुझे आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बेटा अपना ख्याल रख. तो मैंने कहा कि जी अंकल. बोले बेटा देखो, और उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया. बोले बेटा देखो, बार बार जिस घर में तुम जा रही हो वो जल रहा है, बार बार तुम बचा के एक को बाहर निकाल के लेकर आ रही हो और तुम भी बच के निकल आती हो, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब एक जलता हुआ दरवाजा शायद तुम पे गिर जाए. कोई नहीं मदद करता किसी की. मैं अगर सड़क पे निकल जाऊं और किसी से मदद मांगू और ये सोचूं कि 8-10 लोग आके खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा, मैं अकेला ही वहां पे खड़ा रहूंगा. ऐसी ही है ये दुनिया. तो मैंने उनसे बोला आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. मैं चाहती हूँ
कि जब आप वहां अकेले खड़े हो तो कम से कम एक इंसान आपके साथ आके खड़े हो, और वो मैं होंगी, क्योंकि मैं उन लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो नहीं आए मदद के लिए। वो मैं नहीं हूं, और मेरे जैसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ हिम्मत नहीं होती। तो क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, हिम्मत भी आएगी और दुनिया शायद बेहतर भी बन जाए। Sayema, so many girls जो बोलना चाहते हैं, want to speak up, सोशल मीडिया पे अदरवाइज, मगर अब चुप रहती हैं। बिल्कुल चुप रहती हैं। प्रेशर हो या अपने आप से, could be either. It's a very, very risky thing to do. It's not easy because I know the system is not going to support me. I know that. And that's why it becomes very, very difficult, extremely difficult. Jyotsna, if I would know that, whether it's the justice system or it's the press, they will support what's right, none of us will have to do this, what we're doing. But because they are not with the person who wants social harmony, who wants love and compassion, who wants India to be that country which it is, where diversity, there's so much of unity in diversity, and that's the beauty. I don't think any of us will feel scared talking about it. We all once used to proudly talk about these things, right? Now it's difficult. वो दरवाजा था, अब वो खिड़की बन गई, बट फिर भी उस खिड़की का खुलना जरूरी है, हवा का आना जरूरी है। हम सांस कैसे लेंगे? मेरा ये सोचना कि कोई और करेगा, तो फिर वो भी तो यही सोचेगा कि कोई और करेगा। मैं वो करूं जो मेरे बस में है, और वही हर इंसान को सोचना चाहिए। वो करे जो उसके बस में, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और उतना ही काफी है। हर इंसान को वो करने की जरूरत नहीं जो मैं कर रही हूँ, मगर वो अपनी पड़ोसी की इज्जत कर ले, वो किसी को ऊंचा नीचा ना देखे, वो अपने दिल को साफ कर ले, उतना ही काफी, उतना बहुत एक्चुअली। तो कहने लगे उतना ही बहुत है। हाँ, और ये बहुत मुश्किल काम है। वो मेरे लिए फिक्रमंद है, मैं उनके लिए फिक्रमंद हूँ। ये बहुत रियल खौफ है, डर है। बट आई डोंट वांट टू गिव इन टू फियर। I don't want to give in to fear, because if I give in to fear, I will not be able to sleep, because at the end of the day I have to face myself, right? My conscience will not let me sleep, and that's why I think we underestimate the importance of speaking for right. That's the right thing to do. We should stand up for right. Sayema, ये conversation तो चलती जाएगी, and I would love to keep listening to you, but I'm going to let you go. मगर speak to you, Jyotsna, and I'm so I'm sorry that I keep derailing the topic, but I think that this it just all comes out from the heart, and it's a very heart-to-heart chat that I have with you each time we speak, to each other. So thank you for doing this. Thank you for keeping the platform alive, to create love and harmony, in this world, to talk about love, to talk against hatred. It's important to call out the demon. It's important to highlight what is important for us. दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही लंबी है गम की शाम ही तो है। Beautiful. Yes. Beautiful. Sayema, thank you so much. Thank you so much.